मास्टर सचिन तेंडुलकर काल निवृत्त झालेला आहे. सचिनने विंडीजच्या या टेस्ट सिरीज नंतर निवृत्ती घेतलेली आहे. यानंतर सचिन आपल्याला कधीच क्रिकेट फील्डवर बघायला मिळणार नाहीये, पण आज सचिन मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहे. निवृत्तीनंतर सचिन रमेश तेंडुलकर आज पहिल्यांदा एक पत्रकार परिषद घेणार आहे. आपण या पत्रकार परिषदेत जाऊया, ज्याची सगळेच जण वाट बघतायत. सचिनची खरं तर वाट बघतायत. आपण बघतोय एक ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन सध्या तिकडे दाखवलं जातं. ऐकूयात काय म्हणतात. And what I like about him, obviously, is his technique. He's got a great technique, a great appetite for runs, and he started very young as well. Sachin was 16 years and 205 days old when he made his test debut. He was India's youngest test cricketer of all time. Sachin, you must be getting tired now of people asking you questions and giving interviews or what? Oh, I think so. Just done. सचिन रमेश तेंडुलकर SRT फॉरएव्हर असं या ऑडिओ व्हिज्युअल मध्ये लिहिलेलं आहे. थोड्याच वेळात सचिनचं आगमन होणार आहे. सचिन तेंडुलकर, आपला सगळ्यांचा लाडका सचिन रमेश तेंडुलकर काल निवृत्त झालाय. 24 वर्षांचं हे प्रदीर्घ आंतरराष्ट्रीय करिअर आहे आणि या 24 वर्षांच्या करिअरला काल क्रिकेट फील्डवरच्या या करिअरला काल एक पूर्णविराम मिळाला आहे. एक इनिंग सचिनची संपली आहे. दुसरी इनिंग काय आहे हे आपल्याला सगळ्यांनाच बघायचं आहे. पण आज सचिन पत्रकारांशी मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहे. काल मॅच संपल्यानंतर प्रेझेंटेशन सेरेमनी मध्ये सचिननी एक खूप मोठं भाषण केलं. खरं तर सचिन तेंडुलकर इतका भरभरून कधीच बोलला नव्हता, पण हे त्याच्या आयुष्यातलं एक खूप महत्त्वाचं भाषण होतं. ज्या भाषणात त्यांनी सगळ्यांचे आभार मानलेले. प्रत्येक जण ज्या ज्या व्यक्तींनी गेल्या 24 वर्षात त्याच्या आयुष्यात मोलाचा हातभार लावला, त्या प्रत्येकाचे आभार काल या मास्टरनी मानलेले. काल दुपारी सचिन तेंडुलकर निवृत्त झाल्यानंतर सगळेच रडले, पण काल संध्याकाळी सचिनला भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं आणि सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आलं. आपण बघतोय सचिन रमेश तेंडुलकर अखेर या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. प्रत्येकाचं लक्ष या सचिनकडे लागलेलं आहे. आज सचिन काय बोलतोय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. सगळे पत्रकारांनी सुद्धा त्यांना मानवंदना दिली आहे. आपण जाऊयात या कार्यक्रमात, बघूयात सचिन काय म्हणतो. Tell me when I can sit so I can. एक मिनिट. Open the floor for questions. Request you to please identify your name and the publication. For the question and thanks everyone. I'd like to open the floor for Q&A. Can we have the manager there? Hello. Yeah, please identify your name. My name is Endramali from
फ्रॉम सहारा। सचिन से मेरा सवाल है, पिछले 24 साल से आप खेल रहे हैं क्रिकेट और 24 साल के बाद कल जब रात में आप सोते कहीं सपना तो नहीं लग रहा था कि कहीं सपना मैं देख रहा हूं? नहीं, एक 24 साल देश के लिए नहीं लग रहा था कि कहीं सपना मैं देख रहा हूं? नहीं, एक 24 साल देश के लिए क्रिकेट खेलना वो मेरे लिए सबसे अहम चीज थी। और उन 24 सालों में अलग अलग चैलेंजेस आए, मगर वो जो देश के लिए खेलने की जो डिजायर कहते वो इतनी थी स्ट्रांग कि अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्यूशन उनका निकालना, उसमें फैमिली का साथ रहा, कोचेस, दोस्त, प्लेयर्स, काफी लोग थे मेरे साथ। तो वो एक तो मेरे लिए एक ड्रीम था, एक ड्रीम जर्नी थी 24 साल की। मगर कल रात को ऑब्वियसली जब मैं बैठा हुआ था तो अब तक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक नहीं हुआ है कि और क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूं। कहीं ना कहीं तो जाके खेल लूंगा। मगर आई थिंक अगर मुझे 24 साल के बारे में बात करनी है तो मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूंगा कि ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूं क्रिकेट। आई थिंक मुझे लगा कि ये सही वक्त था क्रिकेट रोकने का, और यही कह सकता हूं कि ये बहुत एंजॉयबल जर्नी थी। Can we have the man in the black shirt? देखिए, क्रिकेट तो मेरा लाइफ रह चुका है। जैसे पहले एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि क्रिकेट मेरे लिए ऑक्सीजन है। मेरा ऑलमोस्ट आई मीन 40 साल में 30 साल तो प्रॉपर क्रिकेट खेला हूं। तो जैसे 75% मेरा लाइफ क्रिकेट रह चुका है, तो क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं तो अलग अलग लेवल्स पे एसोसिएशन रहेगा। मे बी नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। आई थिंक 24 साल क्रिकेट खेला हूँ, 24 घंटे में। तो आई थिंक एटलीस्ट 24 दिन तो मिलने चाहिए आराम करने के लिए। तो उसके बाद देखेंगे क्या। पहले बातचीत में, मीडिया से बातचीत में आपने कहा था कि मैं क्रिकेट उसी दिन खेलना छोड़ूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो क्या कंक्लूजन, किस नाते, मतलब कैसे आप पहुंचे उस कंक्लूजन पे कि अब नहीं खेलना है? क्योंकि बहुत टफ रहा होगा। और जहाँ तक नहीं एंजॉय करने का सवाल है, नहाली में जैसे इनिंग आपने खेली, यहाँ भी 74 रन जो बनाए, बाहर से हमें देख के नहीं लगा कि आप एंजॉय नहीं कर रहे। नहीं, एंजॉय तो बिल्कुल कर रहा था, मगर ऑनेस्टली अगर आपको बात बतानी है तो मैंने ऑलवेज ये मेंटेन किया था कि जिस दिन मुझे वो फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे रोकना चाहिए क्रिकेट, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे याद है कि रिटायरमेंट के बारे में काफ़ी सालों से सवाल हो रहे थे, तो मेरा हमेशा यही जवाब रहता था कि जब मुझे वो फीलिंग आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो वो फीलिंग मुझे आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 24 साल खेलने के बाद यू हैव टू अप्रिशिएट कि मेरे काफ़ी इंजरीज थे बीच में, और वो इंजरीज को ओवरकम करना इजी नहीं था। आई थिंक कहीं ना कहीं तो एक स्टेज आती है लाइफ में जहाँ पे आपकी बॉडी आपको मैसेज देती है कि ना इनफ ऑफ दिस फिजिकल लोड। आई थिंक द बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट अभी। तो आई एम जस्ट कि ये मैंने यही सोचा कि
बॉडी अभी वो लोड कंसिस्टेंटली ले नहीं पा रही है। और जैसे अगर मुझे ट्रेनिंग सेशंस करने हैं तो इट वाज बिकमिंग एन एफर्ट कि पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता था। कभी कभी बीच में ऐसा भी ख्याल है कि हाँ मैं बैठ के टीवी देख लूं, तो तभी वहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और जब मैंने उस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना चाहा तो मुझे लगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू लीव द गेम। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ये 2 मैचेस लास्ट मैचेस हो गए, तो लास्ट मैच अगर हो सके तो बंबई में रखे, क्योंकि मेरी माँ ने आज तक इनफैक्ट ये मैच के पहले दिन तक एक भी बॉल कभी लाइफ में देखा नहीं था मुझे खेलते हुए। और मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मैं मैच को आना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड दैट टू बी अ सरप्राइज फॉर हर कि मैं उसके लिए ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ। मगर थ्रू आपकी मदद से उसको पता ही लग गया चैनल्स पे देख के कि ये मैच बंबई में रखी गई है, और खास करके मेरी माँ के लिए। तो दिस मैच ऑब्वियसली बिकेम रियली रियली स्पेशल टू मी। मगर जो आपके सवाल का जवाब तो यही है कि जब मुझे फीलिंग आया कि अभी रोकना चाहिए तो मैंने वो डिसीजन ले लिया। Sachin, Sachin. Last row. No. Sir. Even though physically I'm not playing for India, in my heart I'll always be playing for India and praying for India's victory. Whether मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं, really doesn't matter. I think जो मैं सोचता हूँ as an Indian is जब भी इंडिया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कोई भी फील्ड में पार्टिसिपेट करे, India comes first and then the rest. Sachin, this is Rika from NDTV. वेल सर तो अभी जगह पे है, जब होगा बाकी का हम देखा जाएगा। Sachin, this is Rika from NDTV. Hi. Sachin, this is Rika from NDTV. Hi. I just wanted to ask you, is Bharat Ratna the best award you have got from the nation? Because, everyone has been saying thank you, a billion thank you, Sachin, whether that was the best award or reward you've got. And secondly, West Indies playing against India, your farewell series, has the weak opposition taken the edge out of your farewell series? Let me answer the first question, I think, which is really, really important. Yesterday I said that, this award is for my mother. And it's for my mother for all the sacrifices that she's made right from my birth. When you're a child, it's difficult to understand life. You don't know what your parents have to go through to make you happy. They have sacrificed everything, and the beauty about it is, till this date, I was never told that we did this for you. And when you grow up, you realize all those things, and that's the reason I feel this award is for my mother. And not just, I would like to go a step further. It's not just my mother, but like my mother, there are millions and millions of mothers in India who sacrifice thousands of things for their children. So I'd like to share this award with all the mothers for all the sacrifices they've made. I am humbled and honored that this award is bestowed upon me. This is for my contribution to cricket over the last 24 years, which, when you're growing up, all you want to do is go out and give your best,
score hundreds, get wickets, take catches, run outs, and win matches. And keep bettering your performance. And I've just tried to do that. And while doing that, people have appreciated my performance. And the way they have responded has given me all the strength to go out and repeat that performance. So, you know, the award belongs to the entire nation, I would say. And, you know, I'm truly honored. Also at this stage, I would like to congratulate Professor C.N.R. Rao for receiving Bharat Ratna. I think it's a great honor for me to be named alongside Dr. Rao because his contribution in the field of science is immense. It's just that cricket is always played in front of thousands and thousands in the stadium, and whatever he has done has never happened in front of thousands. But his contribution is immense, so I want to take this opportunity to congratulate him and wish him all the best. Sachin, talking about your second question about West Indies series, please understand West Indies have world-class players. In this sport is the greatest leveler, and there are ups and downs. You know, there have been few occasions where we haven't fared well, and we have been in that boat to understand how it feels. Certain times things just don't work out, and I would say it was maybe one of those things where things didn't work out for them. They are a terrific side. They play cricket in the right spirit, and that is what matters. I think as long as you turn up to give your best and play the cricket the way it is meant to be played, then according to me, then you score full marks there. Sachin, this is Gopia Nandi from 24 Ghanta News Channel, Kolkata. Sachin, you have always been so inspiring for the youngsters. You have always been a role model for them. Don't you have any plan to open a cricket academy or something like that and to bring up more and more Sachins? Well, it's a nice thought that, you know, I need to be involved with cricket, which I would definitely be, and it's not just because I've retired. Even before I retired, I've spent time with youngsters from under 19 teams to Ranji Trophy teams. I mean, it's just that I've not made those things public. I like interacting with players. It's just nice to, you know, share your knowledge and understand sometimes their problems also, which also in return teaches you more about the game. I've thoroughly enjoyed those interactions, and I'd continue to do so. I mean, it may not be done publicly. It would be done very quietly at a very low profile. But I would like to help the youngsters, the next generation, and just share my thoughts and be involved with cricket. Sachin, Somnath Sharma live India. One image of yours. Sachin. This is Abhishek from INS. One image of yours that has touched us in the last 24 hours is that you went back to the pitch and touched it again. So can you talk about that? I know never ever in my life during an international match I would get to do that. And that is where my life started. And those 22 yards have given me everything in life. Whatever I have today is because I've spent time between those 22 yards. It's like a temple for me. So I just wanted to say a big thank you to cricket. And every time I go to bat, I always touch the wicket and take the blessings. And that's what I did yesterday. I didn't say publicly, but I just thanked cricket for everything that I've got in my life. And it was as simple as that, nothing complicated. Sachin, Somnath Sharma live India. Sachin, from Can we have one at a time? Sachin, Excuse me. Sachin. Sir, we are
allocating it for... सचिन बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको सोमनाथ शर्मा लाइव इंडिया से। मैं आपसे जब टीम इंडिया ने मैच जीत लिया था उसके बाद में आप पिच पर गए थे और आपने जमीन को छुआ था, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सचिन काफी इमोशनल मोमेंट थी। मुझे याद है जब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था, डिसीजन लेना चाह रहा था, तभी आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन है। और मेरे फैमिली में ऑब्वियसली सब बहुत इमोशनल हो रहे थे, मगर आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ। इमोशनल तभी हुआ जब मुझे प्लेयर्स ने जिस तरह से सेंड ऑफ दिया, तभी इमोशनल हुआ। जब विकेट पे गया और विकेट से जब मैं वापस आ रहा था, एक्चुअली जब विकेट से बात कर रहा था तब इमोशनल हुआ। और आई थिंक जब वो पर्टिकुलर मोमेंट देखता हूं टीवी पे तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, मगर वैसे तो नॉर्मली ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन मैंने लिया है। आई थिंक वो एक थॉट कि मैं वापस वहां नहीं जा पाऊंगा कोई कंपेटिटिव मैच में, रादर टू पुट इट सिंपल एंड शॉर्ट, इंडिया को रिप्रेजेंट करने, उस बारे में थोड़ा सा इमोशनल हो रहा। सचिन तुषार शेटे फ्रॉम TV9 न्यूज, तुमच्याकडनं मराठीत ऐकायला आवडेल का तुम्ही सांगताना सांगितलं का गेली 28 वर्ष आचरेकर सरांनी तुम्हाला कधी वेल प्लेड म्हणाले नव्हते, मात्र काल भारतरत्न जाहीर झाल्यावरती वेल डन म्हणाले। काय वाटतंय, त्यांची ही शुभेच्छा खूप नक्कीच चांगली असणार आहे, मात्र त्यासाठी खूप वेळ लागला? मला वाटतं सर्वप्रथम सरांच्या आशीर्वादामुळे मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो। सरांबरोबर मला अजून बरेच जण गाईड करणारे होते, बाकीचे कोचेस पण, त्यांच्या हेल्पने मी इथे आलोय, त्यांच्या गायडन्सने आलोय। एक सर आणि माझा भाऊ अजित ही एक सॉलिड टीम होती। एक ऑन फील्ड मला सांगायचे, एक ऑफ द फील्ड मला सांगायचा घरी माझा भाऊ। तर हे डिस्कशन्स गेले ऑलमोस्ट 30 वर्ष चालू राहिले। आणि मी जसं बोललो माझ्या स्पीचमध्ये की परवा रात्री पण भावाने डिस्कस केलं की मी आउट झालो तो शॉट कसा खेळू शकलो असतो। आणि आमच्या रिलेशनशिपची ही ब्युटी आहे की आम्ही शब्दात मांडू शकत नाही की कशा प्रकारे आमची रिलेशनशिप आहे। पण सरांनी मला आतापर्यंत कधीच वेल प्लेड बोलले नव्हते। याचं रिझन एकदम क्लिअर होतं की सरांना आपण म्हणतो की डोक्यात क्रिकेट जाणं, ते डोक्यात क्रिकेट न जाणे हे इम्पॉर्टंट होतं। आणि सरांनी मला हे सांगितलं की हा गेम कुठच्याही क्रिकेटरपेक्षा मोठा गेम आहे, ऑलवेज रिस्पेक्ट कर या गेमला। तर तो मी रिस्पेक्ट करत आलोय गेमला। ज्या ज्या वेळेला रन झाले त्या वेळेला आम्ही असं होप करायचो की मे बी आता म्हणतील सर वेल प्लेड, पण कधीच झालं नाही। म्हणून मी माझ्या भाषणात काल असं जोकिंगली बोललो सर की म्हणलं सर आता तुम्हाला माहिती आहे की ह्याच्या पुढे एकही सिरियस जी कम्पिटिटिव्ह मॅच असते ती खेळणार नाहीये, तर आता मे बी तुम्ही चान्स घेऊ शकता मला वेल प्लेड म्हणण्याचा, कारण मी कॉम्प्लेसंट अजून होणार नाही। पण मला सरांचा काल फोन आला भारतरत्न मिळाल्यानंतर आणि सरांनी मला वेल डन सांगितलं आणि सरांना फार आनंद झालाय, हे ऐकून मला भरपूर आनंद झाला। ज्यावेळेला अशा गोष्टी होतात आणि तुम्हाला स्पेशल लोकांबरोबर शेअर करता येतात त्यावेळेला अशा अवॉर्ड्स मिळाल्यानंतर त्याचा आनंद भरपूर वाढतो आणि तेच काल झालं। सचिन, दिस इज कपिल फ्रॉम सहारा समय। आपने एक बार कहा था कि आप जब प्रेशर को आशीर्वाद की तरह लेते हैं और जब कभी इंजरीज आती है तो उसको गुड लक मानते हैं, तो ये क्या जीनियस की सोच ऐसी होती है क्या? नहीं, इंजुरीज को कभी गुड लक नहीं माना मैंने। नहीं, इंजुरीज देखो, इंजुरीज के समय काफी मुश्किल टाइम हुआ करता था, क्योंकि मुझे जो इंजुरीज हुए कोइंसिडेंटली सब अलग इंजुरीज थे कि ऐसे कॉमन इंजुरीज नहीं थे। और इंजुरीज को ओवरकम करके वापस खेलने के लिए आना इतना आसान नहीं था। हर बार अलग अलग गोल्स थे आगे
कि मेरे पास फिट होने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं, तो 2 महीने में जितना जोर लगा सको उतना जोर ट्रेनिंग में लगाना है। मगर इट इज नॉट ऐसे कि अगर रिकवरी टाइम एक्चुअली 3 महीने का है तो उसको मैं 1.5 महीने में और जिम में ज्यादा वर्कआउट करके खेल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब इंजुरीज होते हैं बॉडी को ठीक होने में नेचर का हाथ बहुत होता है, और नेचर को रिस्पेक्ट करना इज रियली इम्पोर्टेंट। तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि जैसे मेरे टेनिस एल्बो इंजुरी थी, जिसे सर्जरी के बाद 4.5 महीने लग गए ठीक होने के लिए, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 4.5 महीने के बाद मैंने कोशिश की थी पहले अगर खेल सकूं। तो यही कहूँगा कि समटाइम्स टाइम को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और वो चैलेंजेस जो थे उस समय वो आसान नहीं थे, बहुत मुश्किल थे। कभी कभी ऐसा भी लगा कि मेरा करियर खत्म हुआ है, शायद मैं बैट वापस उठा ना पाऊँ। मुझे याद है इवन टेनिस एल्बो सर्जरी के बाद मैं अर्जुन का प्लास्टिक बैट भी उठा नहीं पा रहा था। और जिस दिन मैं बैटिंग करने गया पहली बार सीजन बॉल से, तो ग्राउंड पे 10-10, 12-12 साल के जो छोटे लड़के थे वो फील्डिंग करने आए थे। वो मैंने जोर से मारा हुआ बॉल 10-15 यार्ड पे रोक रहे थे, तो मुझे लगा कि आई डोंट थिंक आई कैन प्ले एनी मोर। और उस समय जो एक प्रेशर आप फील करते हैं वो कुछ अलग ही होता है। तो आई डोंट थिंक कि इंजरी ब्लेसिंग समझ के आप कंटिन्यू कर सकते हो। इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज इन माई लाइफ, और उस समय काफी लोगों के साथ की वजह से मैं वापस आ सका, तो उनको मैं वापस से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। सचिन, अनुराग मीडिया से सचिन, 22 गज पर जब आप जा रहे थे तो हम तो बहुत ज्यादा भावुक थे आपको देख करके, इतने सालों से देख रहे हैं। पर सवाल 22 गज से थोड़ी सी दूर पर है। हम सबको पता है कि पिताजी ने आपका नाम सचिन दा के नाम पर रखा था, तो ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा 22 गज से दूर की आज क्या मौका मिलता है सचिन दा के गाने सुनने का? अगर है तो कौन सा गाना आपका फेवरेट है? नहीं, अभी काफी सारे सॉन्ग्स सुनते हैं, तो सिंगल आउट एक गाना वैसे मुश्किल है, मगर यू नो मेरी पैशन है म्यूजिक, मैं एंजॉय करता हूँ म्यूजिक सुनना। अच्छे मूड में रहूँ तो उस तरह के गाने सुनता हूँ, कभी थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो उस तरह के गाने सुनता हूँ। तो आई थिंक म्यूजिक मेरा एक कांस्टेंट कंपेनियन रह चुका है, और वेरियस अलग अलग आर्टिस्ट, कंपोजर्स, सिंगर्स, इन सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि किसी को भी उस मुकाम पे पहुंचना इजी नहीं होता है, और काफी लोग ऐसे हैं जो उस लेवल पे सालों साल डेकेड के लिए रहे हैं, तो मैं उन सबका आदर करता हूँ। मगर एक गाना अगर आप पूछो तो इट्स डिफिकल्ट। संदीप चव्हाण, सचिन, काल तुझं जे स्वप्न पूर्ण झालं 24 वर्षांचं, सगळेजण तुझ्या स्वप्नांबद्दल बोलतात, पण काल अजून एक अशी व्यक्ती होती जिने तुझ्यासोबत ते स्वप्न जगलं, आणि तो म्हणजे अजित. काल मॅच संपल्यानंतर तुमच्या दोघांचं काय संभाषण झालं, आणि नेमका आता तुमच्या दोघांचे काय फ्युचर प्लॅन आहे? त्याचं एक स्वप्न होतं 24 वर्ष तुझ्यासाठी पाहिलेलं, तेही काल पूर्ण झालेले आहेत. व्हॉट नेक्स्ट? जसं मी बोललो माझ्या भाषणात की हे एक जे ड्रीम होतं ते आम्ही दोघे एकत्र जगलो आहोत. मी देशाला रिप्रेझेंट करत होतो, आणि अलॉंग विथ दॅट इव्हन अजितला रिप्रेझेंट करत होतो. आय थिंक शब्दात मांडणं भरपूर डिफिकल्ट आहे की त्याने माझ्यासाठी काय केलंय आयुष्यात. कालचं ज्यावेळेला आम्ही भेटलो त्यावेळेला डिस्कशन मला एवढं वाटलं की तो थोडा इमोशनल होता, पण तो मला दाखवत नव्हता. पण ऍट द सेम टाइम मला तो रिलीव्ड आणि रिलॅक्स पण दिसला, कारण ज्या प्रकारे रिटायरमेंट माझी झाली आणि लोकांचा जो रिस्पॉन्स होता, जे प्रेम दाखवलं लोकांनी, हे कधी तुम्ही प्लॅन करू शकत नाही, हे देवच ठरवतो. आणि मी देवासमोर हात जोडतो की मला असा दिवस दाखवला की ह्याच्याहून अजून मी काही विचारू शकत नाही, काही मागू पण शकत नाही अजून जास्त. तर तेच फिलिंग अजितला पण होतं काल, आणि आम्ही काही जास्त बोललो नाही, पण जेवढं बोललो त्याच्यात हे मला कळलं की ना
की तो रिलीव्ड होता की सगळं एकदम चांगलं झालं मनासारखं आणि देवाच्याच कृपेमुळे झालं. Sachin, hello Sachin, Geraint Hughes here from Sky Sports in the United Kingdom. Can I just ask you a couple of questions? First of all, many of our cricket lovers back at home are watching. They'd like to know how you felt this morning when you woke up. And can we also ask what was your favourite moment playing against England? And now that you have some time on your hands and you might be able to watch some cricket, can you tell us how you think the Ashes might go? If I forget your next two questions, please remind me. But I'm going to answer the first question. When I woke up this morning, first of all, I woke up at 6:50 in the morning. I go according to my body clock, and yesterday I woke up at 6:50 in the morning. So, I woke up at 6:50 in the morning, and then I suddenly realized that, well, I don't need to quickly have a shower and get ready for the match. I made myself a cup of tea, and then enjoyed a nice breakfast with my wife. It was a relaxed morning. Yes, a lot of guys sent me their best wishes, so I spent a lot of time responding to their SMSs and thanking them for all the support and all the good wishes over the last 24 years. The morning was pretty much relaxed, and then I'm here in front of you. About the Ashes, I don't know. I mean, I think it is something that I'm sure both the nations are looking forward to. Australia and England. England wanting to prove a point that they can go down under and still give them a difficult time. And obviously Australia would want to bounce back and prove England wrong. It's going to be exciting. I mean, the way I saw Mitchell Johnson bowl here in India, I think if he's part of the Australian squad, then it should be interesting. My favorite moment against England was, I would say, two. The first 100 that I scored in Old Trafford, and the second moment has to be in 2008. We chased 374 in Chennai against England. That has to be a special one for me. Okay. So these are moments I would recall. अभिनंदन. सगळ्यात पहिल्यांदा देशाचा मूड केवळ 4 तासात बदलला. 12 वाजता तुझ्या सकट सगळ्या देशाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. साधारण 4च्या सुमारास बातमी आली, भारतरत्न तुला जाहीर झालाय. हा अख्खा 2 मोमेंट्स मधला फरक, आणि तू पहिला प्लेयर आहेस की ज्याला भारतरत्न मिळाला. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा एक मोठं अभिनंदन या सगळ्या क्रीडा विश्वाकडनं. हे सगळ्यात किती तुझ्या दृष्टीने मोठं होतं, आणि एक तू आज खासदार आहेस, तर ही ट्रेडिशन व्हायला पाहिजे तुझ्यासाठी. किंबहुना पहिल्यांदाच नियम बदलण्यात आला होता की एका प्लेयरला पण मिळावा. तर या पुढच्या काळात ध्यानचंद असतील किंवा विश्वनाथन आनंद असेल, अशा ग्रेटेस्ट प्लेयरना तुझ्या उंचीपर्यंत पोहोचणारा यांनाही हा पुरस्कार मिळावा, या दृष्टीने एक मत तू काही मांडू शकशील का? मला वाटतं आत्ता मी जे काय बोलतोय हे ऑब्व्हियसली मत मांडतोय, तर हे आय एम शुअर अख्खं जग ऐकतंय. जसं मी आधी बोललो की हे अवॉर्ड मी रिसीव्ह करतोय ऑन बिहाफ ऑफ आपले सगळे भारतवासी, आणि मी रिस्पेक्ट करतो आणि ह्या अवॉर्डचा. कारण हे अवॉर्ड मिळाल्यानंतर पुढे काय, दिस इज दी अल्टिमेट. आणि जर काय मला बाकीच्या स्पोर्ट्समन बद्दल बोलायचं असेल तर सर्वप्रथम मी हे म्हणेन की मी हे अवॉर्ड सगळ्यांच्या वतीने एक्सेप्ट करतोय. आपल्या देशात भरपूर मोठमोठे स्पोर्ट्समन आणि स्पोर्ट्स वुमेन झालेले आहेत, आणि त्यांची सगळ्यांची नावं लहानपणापासून ऐकत आलोय आपण. एक ते कल्चर, त्या कल्चरमध्ये वाढलेलो आहोत. जे काय त्यांची कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कधीच कोण विसरू नाही शकत. आणि माझ्या मते दरवाजा हा उघडलेला आहे असं मी म्हणेन की एका स्पोर्ट्समनला भारतरत्न मिळालेला आहे. आणि ह्याच्या पुढेही मी अशीच प्रार्थना करतो की आपल्या सगळ्या ग्रेट स्पोर्ट्समनना आणि स्पोर्ट्स वुमेनना असंच त्यांचे जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे देशासाठी ती अप्रिशिएट केली जाय. आणि हे अवॉर्ड एक स्पेशल अवॉर्ड आहे, आणि
स्पेशल माणसांना मिळालं तर आपल्याला फारच आनंद होईल. आणि मी देवाकडे प्रार्थना करतो की सगळ्यांची जी कॉन्ट्रीब्युशन आहे देशासाठी ती अप्रिशिएट हो. Sachin, this is Shoaib Ahmed. Sachin, this way. Sachin, yeah, hi. Sachin, this is Shoaib here from CNN IBN, this side. I'm sure this morning when you got up, you said how it panned out this morning. How difficult has been so far in the last few hours to kind of, has it sunk in yet that you will not be playing cricket for the country? That's the first question. Try and give a specific answer. The second question, Sachin, in this marathon career of yours, I'm sure if you could just tell us about the two special moments which will always remain closest to your heart. There will be a number of them, but please, if you could think of two special moments. I think the first moment, I said earlier that when I went on the wicket and I stood between 22 yards, I realized that this is the last time I'm standing here in front of a packed stadium, actually being part of the Indian team. This will never happen again. So that I was really emotional, and I couldn't control tears. Knowing the fact that I would never have a cricket bat in my hand here playing for India, which was really, really emotional. There have been some wonderful moments, and I could, sort of think of all those things. It happened very fast, and while my walk back to the dressing room, you guys may have noticed, and I didn't want to be rude, but I could not look up to shake while I was shaking hands with most of the guys, including the West Indian team, because I was in tears and I didn't want anyone to see my face that way. I think it's hard to express what I feel, but in spite of all these things, I know the decision was correct. I know the decision is right. Sachin, this is hello, Sachin. This is K.R. Nair from Gulf News, Dubai. Your sandstorm knock. You said that your mother was in tears after saying that. So have you, when playing any knocks, come back and your father and mother has appreciated? And how much, when you look back, which is the knock which has given you the most satisfaction in your life? See, the beauty about my family is they never lost balance. Whether I scored 100 or 15, 20, it didn't matter. I mean, my father and mother, they always had encouraging words for me. I was able to perform well since my school days because the balance was maintained at home. Nobody got carried away with my good performances and celebrated those occasions endlessly. Like any other Indian family, we used to buy a packet of sweets and just offer those sweets to the Almighty and thanking the Almighty for everything that is happening in my life. And that process continued. Even yesterday, my mother told me when I spoke to her later on, she said, I've kept sweets in front of God. And that continues. I mean, it will never stop. It's something that I've learned over the years from my parents, and that's what I meant earlier when I spoke. When you grow up, you understand more about life and what your parents have done for you. And this is one of those things. So their reaction to me when I got back from any tour was never related to the way I performed. It was more about parents and their child, and it has always stayed that way. Hi Sachin, this is Suchitra Hello. from DD News Delhi. Are you happy with your last innings of 74, and what was your mother's reaction after watching you play? Well, my mother was extremely happy. Earlier I thought she might come, she may not come because it was a little difficult for her to travel, and was the only reason I requested the BCCI to keep this match in Mumbai. After witnessing the first day itself, she sat for some time, and I was so worried that she may not be able to sit there for long.
I had also, for safety, I had also told MCA to keep a room for me over there for my mother in Garbare guest house, which they had done. But my mother preferred being there watching each and every ball which was played. So it is special, and I could yesterday when I went to meet her in the president's box, I could see it in her eyes what it meant, and we are not someone who would just get carried away and respond differently. I mean, it was a very controlled and balanced reaction, but whatever she spoke to me, the more she spoke to me through her eyes, and I could pick that. So Sachin, I am Vishwanath from Sachin. TV madhun Sachin. Sachin, देखिए अर्जुन तेंदुलकर को एज अ फादर कहूंगा कि उसको छोड़ दो, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो। उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए। अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता, क्रिकेट बैट नहीं होती, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे, लिटरेचर फील्ड में थे। मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे, मेरे फादर को, कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन नहीं है उसके हाथ में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अर्जुन ने चूज किया है कि उसके हाथ में क्रिकेट की बैट होनी चाहिए। वो एक पैशनेट लड़का है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के जो मैं कहता हूं कि यू हैव टू बी मैडली इन लव विद द स्पोर्ट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड ही इज मैडली इन लव विद क्रिकेट, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आई थिंक परफॉर्मेंसेस होना ना होना, मैं नहीं प्रेशर डालना चाहूंगा उसके ऊपर, और आपने भी नहीं डालना चाहिए। आई थिंक कोई भी प्लेयर उसको आप खुला छोड़ दो तो ही इज एबल टू परफॉर्म बेटर, एंड ही इज अबव ऑल ही इज एबल टू एंजॉय क्रिकेट, एंड जस्ट दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। ही हैज टू जस्ट एंजॉय क्रिकेट। आगे का जो स्क्रिप्ट रहेगा, व्हाटएवर वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम कोई नहीं करते। Sachin, I am Vishwanath from Madhubhumi, Delhi, Kerala. Can we just have everyone just raise Sachin. their Sachin. hand? आई थिंक सबसे अच्छा पल तो मैं यही कहूंगा कि जब हमने 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीता यहाँ पे। आई थिंक मेरा एक ख्वाब था कि वर्ल्ड कप जीतना है। काफी टाइम रुकना पड़ा, 22 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, मगर वो दिन मुझे भगवान ने दिखाया, तो दैट हैज टू बी अ स्पेशल मोमेंट। और मैं ये भी कहूंगा कि कल का दिन एक बहुत खास दिन था मेरे लिए। जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूं उसके लिए। मैं एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा सबको। आई थिंक इट वाज रियली रियली स्पेशल। तो ये 2 बहुत खास पल थे मेरे लिए। और अगर एक डिसअपॉइंटिंग पल के बारे में बात करना चाहूं तो आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप में हम जब फाइनल में पहुंचे, इतना अच्छा खेल रहे थे, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतने पास आके हम एक फाइनल हर्डल जो थी वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो वो एक लाइक एनी अदर स्पोर्ट्समैन, इवन आई वाज डिसअपॉइंटेड। Sachin, I am Vishwanath from Madhubhumi, Delhi, Kerala. Sachin, this is Anjali. Can we respect the occasion? Sachin, Can we not have Sachin, I wanted to ask you, you've managed to influence several generations of cricketers who shared the dressing room with you and after as well. Rohit, Virat, Yuvraj, all of them have spoken about how your batsmanship has influenced them, and also how you've acted as a very inspirational figure. How do you feel about having influenced these generations of cricketers? And any cricketer or any cricketer's success you've particularly enjoyed, young cricketers? To answer the last question first, I enjoy everyone's success. It is about a team sport, and in a team sport, it really doesn't matter who performs and we win. Out of 11, you're not going to have all 11 guys delivering on a given day. There might be
2 or 3 exceptional performances, and those good performances are always supported by the rest. As long as that consistency is maintained, it really doesn't matter who performs. Talking about the new generation, all the guys, I've thoroughly enjoyed being part of the team. I know that someone like Bhuvaneshwar was not even born when I started playing for India. Jokingly, I've told many guys कि मैं जब dressing room में आता हूँ मेरे को good morning sir करके wish करो, but no, it's been a joy. It's been a joy to work with them and be part of the same squad, because it's not about whatever I say is 100% correct. If you are prepared to understand what they are also telling you, you become a better student of this sport. And I feel that process will continue right till the time I stop breathing, because if you are prepared to learn, then you will learn. And that is what I've maintained. I've shared my experiences and various things about batting and all that with them, my observations on their batting, what they should do and all that. It's fun to do all that. I've always done that, not just because I'm the senior most player in the squad, but even when I was the junior most member in the squad, I would still do that. It was about talking cricket, breathing cricket. It is about cricket, and it really doesn't matter what stage of life you are in. I have enjoyed talking cricket and interacting with various players on cricket. It's been fun. Sachin, मला असं विचारायचं आहे, सचिन मला एक You are the first person who's getting sports person getting Bharat Ratna. Will you lead the campaign to include cricket into Olympics? That is my first question. Will you lead the campaign to include cricket into Olympics? Olympics as the ambassador of Indian sports. Well, as I said that, it's been hardly 24 hours since I've retired, and you're already engaging me into various other things. Give me some time to breathe. We'll talk about it in time to come. Like I mentioned, as and when I think about doing various things, I'll let you know. This is one of those things. सचिन मी महेश विचारे महाराष्ट्र टाइम्स मधून. सचिन मी महेश विचारे महाराष्ट्र टाइम्स मधून बोलते. मला प्रश्न असा आहे की गेली 24 वर्ष तू सातत्याने खेळतोयस आणि लोकांना आनंद दिलेला आहेस. या 24 वर्षामध्ये अनेक लोकांनी तुझ्याबद्दल भरभरून लिहिलेलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने तुझं एकूण खेळ लोकांसमोर मांडलेला आहे. अनेक टीकाकारांनी टीका सुद्धा केलेली आहे. तर टीकाकारांचं तुझ्या या एकूण कारकिर्दीमध्ये काय स्थान आहे किंवा काय भूमिका आहे? एका स्टेज पर्यंत मी बघतो की काय लिहिलंय आणि काय म्हणतायत लोक आणि कोण लिहित आहे आणि काय म्हणतायत. इट इज नॉट की ह्या जगात ओपिनियन जर का घ्यायला गेलात तर सगळीकडेच तुम्हाला ओपिनियन्स मिळतील. आय थिंक एक स्टेज येते ज्या वेळेला तुम्ही एक्झॅक्टली अंडरस्टँड करता की कुठच्या माणसांचा तुम्ही ऍडवाइस घ्यायला पाहिजे आणि कुठची माणसं कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करतायत आणि त्याच्या मागे काय हेतू आहे. आय डोंट थिंक मी एवढं जास्त लक्ष दिलेलं आहे, कारण जे मला गाईड करणारे होते ते माझ्या बरोबर होते आणि त्यांच्यापैकी कोणाच्याही हातात पेन जास्त वेळ नव्हतं. सगळ्यांच्या हातात इधर क्रिकेट बॅट होती किंवा क्रिकेटचे थॉट्स होते जे मला एनकरेज करणार होते जास्त चांगला परफॉर्मन्स कसा होईल त्या फील्डमध्ये, नॉट की कसा नाही होणार. तर मला फक्त त्याच माणसांबरोबर मी नॉर्मली इंटरॅक्ट करत होतो ज्यांचा इंटरेस्ट होता की मी रन्स कसे जास्त करू शकतो आणि चांगला परफॉर्मन्स कसा देऊ शकतो. त्याच्या पलीकडे मला खरंच जास्त विचार करायचा नव्हता कोणाचा.
सचिन जानवीमुळे एबीपी न्यूज मधून अभिनंदन आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा। हिंदी में आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने रिटायरमेंट ली तब बहुत से लोगों ने कहा कि माय चाइल्डहुड हैज एंडेड, तो बहुत से लोगों को सडनली स्ट्राइक हुआ है, दे आर इन 40s, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैंने सुना है कि अभी कहते हैं कि 40s is the new 20s, so don't think that you're 40. Continue to be a 20-year-old, it works better. Child तो हम सब होते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, and that is how it's meant to be. We need to enjoy cricket to its fullest, and then cricket has always brought out that childlike exuberance whenever I've been on the field, and I hope that is the case with all the cricket lovers. As and when you hold a cricket bat or you want to bowl a few balls, you should have that energy, that bubbliness has to be there, and it's fun to do that. Sachin, Sachin here, just one minute. Excuse me, please. Hello. Sachin, hello. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। Excuse me. Hang on one sec, please. Sachin, India has been having a foreign coach for a number of years, more than a decade, and many cricketers like Gavaskar or even Kapil Dev, they said, why not an Indian coach? Now, can you share your thoughts on this, having played under an Indian coach as well as a foreign coach? See, I don't think it is more about foreign coach. It is about who's coaching and how best can they bring the best results for India and how consistently they can do it is what matters. I don't think in that direction there has to be a foreign coach or there has to be an Indian coach. To me, there should be a proper coach who understands the players, and he is more like your friend, because I think at this level, we all know how to play a cover drive. But when something goes wrong, it is not technically as such, but sometimes it is between your ears. So who can you sit with and, sort that out is what eventually matters. So to me, I feel coach is a coach. It really doesn't matter where he comes from. As long as the relation between the coach and the player is a healthy relationship where they are more of friends, and any sort of problem which a player has, he should be able to confide into his coach and also know for a fact that it would not be leaked out, which is really important, because that to have that confidence in your coach is so important. It is as simple as that for me. Thank you very much. We are concluding the Q&A session. Thank you very much. This is the end. Thanks so much. आपण बघतोय सचिन रमेश तेंडुलकर यांना ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। काल सचिन निवृत्त झाला आणि आज सचिनने ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। 24 वर्षांचा हा एक मोठा प्रवास आहे आणि या 24 वर्षांचा प्रवास जो आहे तो त्यांनी उलगडून सांगितलेला आहे। आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात आणि माझ्या आयुष्यात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत या सगळ्या गोष्टींवर सचिनने आज भाष्य केलेलं आहे। काल त्यांनी निवृत्ती घेतली, काल संध्याकाळी त्याला भारतरत्न मिळालं। हे भारतरत्न मी माझ्या आईला समर्पित करतो आणि फक्त माझ्या आईला नाही, एक अत्यंत मोठी गोष्ट आज सचिन बोललेला आहे। ज्या सगळ्या आया ज्यांनी आपल्या मुलांसाठी सॅक्रिफाइस केलेलं आहे त्या सगळ्या आयांसाठी हे भारतरत्न आहे। इतकी मोठी गोष्ट आज हा सचिन रमेश तेंडुलकर बोललाय, आज हा भारतरत्न सचिन बोललेला आहे।